अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको एक नई वीडियो में वेलकम करते हैं। आप जानते हैं कि हम आजकल इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम पैराग्राफ राइटिंग और कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। तो आज एक बार फिर एक नया टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और इस टॉपिक में हम गर्ल गाइड्स के बारे में रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। गर्ल गाइड्स is a British organization of girls. Girl Guides is a British organization of girls. It was founded by Baden Powell and his sister Lady Agnes in 1910. The main objective of this movement is to make teenage girls conscious of their responsibilities. A member, a girl guide, is given a variety of programs that shape her character. She learns in association with other girl guides how to keep herself clean and healthy. She is instructed how to build her moral and social character. She learns the basic facts about courtesy and etiquette. Furthermore, a girl guide is taught how to develop homemaking abilities. She learns household skills like cooking, knitting, stitching, planning, and maintenance. Now, translation. गर्ल गाइड्स लड़कियों की एक बरतानवी तंजीम है। इसकी बुनियाद बैडन पावल और उसकी बहन लेडी एग्नेस ने 1910 में रखी थी। इस तहरीक का बुनियादी मकसद नौउम्र लड़कियों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करना है। एक मेंबर, एक गर्ल गाइड को मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम दिए जाते हैं जो उसके किरदार की तश्कील करते हैं। वो दूसरी गर्ल गाइड्स के साथ मिलकर सीखती है कि खुद को साफ सुथरा और सेहतमंद कैसे रखा जाए। उसे हिदायत दी जाती है कि वो अपने इखलाकी और समाजी किरदार की तामीर कैसे करे। वो शाइस्तगी और आदाब के बारे में बुनियादी हकूक सीखती है। वो शाइस्तगी और आदाब के बारे में बुनियादी हकाइक सीखती है। मजीद बरा, एक गर्ल गाइड को यह सिखाया जाता है कि घर बनाने की सलाहियतों को कैसे तैयार किया जाए। वो खाना पकाना, बुनाई, सिलाई, मनसूबाबंदी और देखभाल जैसे घरेलू हुनर सीखती है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।